ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है 9 ग्राम ऑफ H2O इज इलेक्ट्रोलाइज्ड कंप्लीटली विद 50% करंट एफिशिएंसी। तो देखो, सबसे पहले तो जो भी वैल्यू आती है ना, एफिशिएंसी मींस जितना आपने करंट पास किया, ठीक है। लेट अस से कि आपने करंट पास किया 100 एम्पियर, ठीक है। तो अगर 100 एम्पियर करंट पास करते हो और एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी की है 50%, इसका मतलब 50 एम्पियर इज एक्चुअली यूज्ड, 50 इज wasted out, that is called current efficiency, ठीक है। जैसे मान लिया पहले में लिखा है 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी बट एफिशिएंसी तो 50% है, तो इसका मतलब 1 फैराडे में से एक्चुअल जो यूज हुआ दैट इज 0.5 फैराडे। गॉट इट। सेकंड में लिखा है 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो व्हेन वी पास 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो कितना परसेंट यूज होगा, कितना फैराडे यूज होगा? 3 डिवाइड बाई 2, सीधा करो ना, हाफ हुआ ना, 50% मतलब हाफ, है ना। तो अब हम पहले तो 9 ग्राम H2O को इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज डन, H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करी, तो इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा क्या? H2 गैस and O2 gas, these are the products formed. So H2O, if 1 mole of H2O is electrolyzed, then 1 mole of H2 is formed and half mole of O2 is formed. अगर आपको कंप्लीट रिएक्शन जानना है तो आपको पता है कि H2O जो है that is in the form of H plus and OH minus. At cathode क्या रिएक्शन हो जाएगा? H plus आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे and we get H2 gas, और at anode what happened, जो OH minus है that will lose electron, 4 OH minus give O2 plus 2 H2O plus 4 electron. This is the overall reaction. So net reaction क्या होगा? Net reaction is, you know, number of electrons gained is equal to number of electrons lost, so it is multiplied by 2, 4H plus 4OH minus, so it becomes 4H2O, that will give 2H2 gas, O2 gas plus 2H2O liquid, so 4 2, so it is net reaction is 2H2O liquid gives 2H2 gas plus O2 gas, or we can write H2O liquid to give H2 gas plus half O2 gas. So you can write it in this way, you can write in this way, it is up to you. Got it? This is the reaction of electrolysis of water. Okay? So that means if 1 mole of H2O is electrolyzed, then 1 mole of H2 and half mole of O2 is formed.
So that means in first reaction 4 electrons are involved. In the second reaction 2 electrons are involved. Means if in terms of mole we define it, it means 4 Faraday and 2 Faraday, right? That means if what is the molar mass of H2O? Yes. So 18 gram, to electrolyze 18 gram, we need how many Faraday? 2 Faraday. So to electrolyze 9 gram, we need 1 Faraday of electricity. कर सकते हैं ना, बट 1 Faraday 9 ग्राम के लिए, ये तो मैंने पीछे समझाया आपको पूरा, है ना? समझाना अलग चीज है और आपको समझना अलग चीज है। मतलब कैसे इलेक्ट्रोलिसिस हुई वो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे हुई इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? बट आप ऐसे समझ लो कि H2O से H2 प्लस हाफ O2 बना, दैट मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, सामने दिख रहे हैं, ठीक? तो 9 ग्राम के लिए 1 Faraday इलेक्ट्रिसिटी, 9 Faraday अगर आपको वाटर इलेक्ट्रोलाइज करना है तो हमें 1 Faraday इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जब 100% करंट एफिशिएंसी हो। ये जो कैलकुलेशन से आता है दैट इज फॉर 100% करंट एफिशिएंसी, बट करंट एफिशिएंसी तो 50% है। तो इसका मतलब कितने Faraday चाहिए मुझे? 2 Faraday is required, है ना? 2 Faraday will be needed so that 1 Faraday is effectively used. 2 Faraday इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें से यूज कितना होगा? 1 Faraday, और 1 Faraday चाहिए हमें 9 ग्राम के लिए। तो 50% करंट एफिशिएंसी वाला जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो कितना चाहिए? 2 Faraday। पहले दिया 1 Faraday, गलत हो गया। फिर दिया इसने 3 Faraday, दोनों गलत। आगे की बात करते हैं कि 18 ग्राम जो है, अब एफिशिएंसी की बात नहीं होगी। अब 18 ग्राम अगर इलेक्ट्रोलाइज होता है तो हाफ मोल जो है O2 बनेगा, सही है? तो अगर मुझे one mole and half mole O2 is formed from 1 mole of H2. So 18 gram of H2O will give half mole of O2. So 9 gram of H2O will give 1/4 mole of H2O. So 1/4 mole of H2O means 1/4 into 22.4 liter at STP. Beta molar volume. Molar volume is equal to 22.4 liter at STP. So that means it is 5.6 liter at STP. That means if 9 gram of water is electrolyzed, 5.6 liter of O2 is produced, will be formed at STP. That means third option is correct. Got it? Okay. Now next one. Yes.
1 second. रिपीट करोगे क्या बोल रहे हो आप? Dilute H2SO4 is electrolyzed using 2 Faraday electricity. Then what is the volume of gas formed or evolved at ST? So you know, dilute H2SO4, that will give H plus and SO4 2 negative. Now at cathode, H plus ion will gain electron to give hydrogen gas, and at anode there is a competition between SO4 2 negative and water. So obviously water will lose electron to give O2 gas plus 4H plus for 4 electron. Volume of gases evolved होगा question. So that means it is just like electrolysis of water. So when 2 Faraday electricity is passed, you know, it is 2 Faraday. So 2 Faraday electricity passed, so we get 1 mole of H2, and 4 Faraday, so we get half mole O2, 1 mole O2, but we are passing 2 Faraday only, so half mole of O2. Means when it is electrolyzed, just like electrolysis of water, H2O liquid to give H2 gas plus half O2 gas. Means electrolysis of dilute H2SO4 is just like electrolysis of water. So when 2 Faraday of electricity is passed, we get 1 mole of H2 and half mole O2. Means total number of moles of gases evolved, that is equal to 1.5. Okay. So volume of gases evolved, that is equal to 1.5 into 22.4, or we can write it as 3 by 2 into 22.4, that is 3 into 11.2, 33.6 liter at a ST. Okay, so this is the answer, 33.6 liter at a ST. Yes. हाँ? क्वेश्चन भेज दे बच्चा, उसने क्या लिखा आप क्या बोल रहे हो, मुझे हो सकता है उसने कुछ और और बेटा आप बोल रहे हो ना सही, आप क्वेश्चन भेजो मुझे। जो भी डाउट होता है ना उसको भेज दिया करो, क्योंकि आप बोलोगे कुछ मुझे समझ आएगा, कुछ मैं आंसर दूंगा कुछ। बेटर टू सेंड द क्वेश्चन।
जब मर्जी सेंड कर देना, ठीक है। और तभी पूछा करो, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन का सेंस ही कुछ अलग निकल रहा हो। आपने जैसे बोला वैसे आंसर ये आना चाहिए जो मैंने लिखा है। अगर आप बोल रहे हो कि आंसर अलग है तो इसका मतलब क्वेश्चन ही अलग है। Okay, next is if density of copper is 8.94 gram per centimeter cube, the number of Faradays required to plate an area 10 centimeter into 10 centimeter of thickness of 10 raised power minus 2 centimeter using copper sulfate solution as electrolyte is. अब देखो, density of copper is given to us 8.94 gram per centimeter cube. Number of Faradays required to plate an area. Now area is given. It is not plate, it is polish an area. So it is says also given as 10 raised per minus 2 centimeter. So that means volume of copper deposited, that is area into thickness. So it is 100 into 10 raised per minus 2. That means 1 centimeter cube, because it's 100 centimeter square into 100 10 minus 2 centimeter. So it becomes 1 centimeter cube. So this is the volume of copper that is polished. So from this volume and density we can calculate mass, because density is mass or volume. So mass is equal to density into volume. So mass of copper required is equal to 8.94 gram per centimeter cube into 1. That means 8.94 gram. This is the mass of copper required to polish this area of given thickness. And we are using copper sulfate solution as electrolyte. So in copper sulfate solution, copper is in the form of copper 2 plus 2 electron to give copper. So when we pass 2 Faraday of electricity, we have 1 mole of copper. And what is the weight of 1 mole of copper? It is 63.5 gram. But we need only 8.94 gram. So number of Faradays required to get 63.5 gram of copper, that is equal to 2. So number of Faradays required to get 8.94 gram of copper, that is equal to 2 by 63.5 into 8.94. कितना हो गया? हाँ 9 ले लो.
तो लगभग 18/63 ऑलमोस्ट। तो 18 3 54, almost 3.5. So it becomes 0. तो 100 हो गया 35, 0.3 के राउंड आया ना। तो the it is second. If equal quantities of electricity are passed through 3 voltmeter containing FeSO4, Fe2SO4 thrice, and FeNO3, then which of the following is not true? So see, first is FeSO4. In FeSO4 there is Fe2 plus. In Fe2SO4 thrice we have Fe3 plus. In FeNO3 thrice again we have Fe3 plus. So when equal amount of electricity is passed, see, 2 Faraday, 3 Faraday, the amount of iron deposited in FeNO3 thrice is 2/3. Yes, that's true, because it is amount of iron deposited in FeNO3 thrice, that is 2/3 of iron deposited in FeSO4. So that's true. Then same gas will be evolved in all the 3 cases at anode. That's true, because this sulfate and nitrate, ये फोन करा है बंदा ना, बोलो मैं क्लास लेना भी, वॉइस नहीं। So sulfate and nitrate, and we compare it with OH minus, right? So at anode, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो पहले किया था, तब किया था मैंने ना, जब आप आने वाले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक। हाँ जी, ठीक। अच्छा, तो that means first option is incorrect, only first, ठीक है। हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा कि FeNO3 से FeSO4 का कंपैरिजन, तो यहाँ बोल रहा है कि FeSO4 के सामने FeNO3 थ्राइस में जो आयरन है, तो अगर FeSO4 1 है तो ये 2/3 है ना, सही हो गया ना, ठीक है। Pressure of hydrogen required to make the potential of hydrogen electrode 0
in pure water at 298 Kelvin is, what is the pressure of hydrogen required? तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है हमें, निकालना है to make the potential of hydrogen electrode zero in pure water. So you know कि hydrogen electrode means this is the reaction. So E of H plus H2PT, that is equal to E naught H plus H2PT minus 0.0591 upon N log of pressure of hydrogen gas divided by H plus raised to power 2. So H plus की concentration के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, but लिखा है in pure water at 298 Kelvin. So when it is water is pure at 298 Kelvin, that means what is H plus ion concentration? Yes, at 298 Kelvin. Okay, obviously it is 0 minus 0.0591 upon 2 log of pressure of hydrogen divided by 10 raised per 7 raised per 2. Now E of electrode potential of hydrogen is 0 only if pressure of hydrogen divided by 10 minus 14, that should be equal to 1, because log 1 is 0, right? Then only it is 0. So pressure of hydrogen should be equal to 10 raised per minus 14 atmosphere. So that should be answer. Simultaneously do check the answers, okay? अच्छा कर रहे हो ना सर सर, ओके, समझ आ गया भाई? Okay, question is, consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different EMF values as shown in the diagram below. A species undergoing disproportionation is, see, in the first case, what is the oxidation number of bromine? It is plus 7. It is plus 5, plus 1, 0 and minus 1. So BrO4 negative can never disproportionate, because what is the oxidation, what is the range of oxidation number of bromine? Minus 1 to plus 7, because for halogens configuration is Ns2Np5. Ns2Np5. So Ns2Np5, so it gain 1 electrons to acquire noble gas and lose 7 electrons to get stable configuration. So oxidation state varies from minus 1 to plus 7. So disproportionation जो होती है
What is disproportionation? Means same element gets oxidized as well as reduced. That means सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा. सो BrO4 नेगेटिव ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर इज मैक्सिमम और मिनिमम होगा तो वो नहीं कर सकता. तो कौन कर सकते हैं? या तो ये करेगा, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है. 3 है. तो हमें करना क्या है? हाँ, बाकी कर सकते हैं. तो ये पूछ रहा है कि पर एक्चुअल में कौन करेगा? दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे BrO3 नेगेटिव, सो BrO3 नेगेटिव if it undergoes disproportionation, that will give these two species, BrO3 negative to BrO4 negative, BrO3 negative to HBrO. So what is this? From +5 to +7, that is oxidation. +5 to +1, that is reduction. So E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. Means E0 reduction किस पे होगी? कैथोड पे. ऑक्सीडेशन एनोड. So E0 cathode is 1.5 minus 1.82. So that comes out to be negative. So if E0 cell is negative, what is delta G0? Positive. That means this reaction is non-spontaneous. That means it will not undergo disproportionation. Okay. Now come to the second part. HBrO to give BrO3 negative plus Br2. HBrO. So BrO3 negative to +1 to +5, oxidation, +1 to 0, reduction. So E0 cell is E0 cathode. What is E0 cathode? 1.595 minus 1.6062. Sorry, not 1.5. So it is positive. That means it can undergo disproportionation. So that means this is the right option. तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल देखना है कि जिस के जैसे ये लिया हमने, इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो इसका E0 ज्यादा है, रिडक्शन वाला कम है. दैट मीन्स ये नहीं होगा. जिस एलिमेंट से को हम कंसिडर कर रहे हैं उसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वैल्यू ज्यादा है, और रिडक्शन हो रहा है तो वैल्यू कम है. दैट मीन्स ये चीज नहीं होगी. दूसरे का बात करें इसकी, तो पीछे जा रहे हैं तो वैल्यू
कम है, आगे जा रहे हैं तो वैल्यू ज्यादा है, मीन्स होगा। इसके आगे करेंगे, पीछे जा रहे हैं वैल्यू, नहीं BR2 की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो हो सकता है ना, पीछे जा रहे हैं तो वैल्यू कम है, ये ज्यादा है, आगे जा रहे हैं तो वैल्यू कम है, ये भी नहीं होगा। समझे? तो इसलिए HBRO इज द राइट ऑप्शन। ओके, ये ऊपर क्या मिट गया है? 23 क्वेश्चन में ऊपर क्या है इसके? Okay, so in the electrochemical cell, zinc sulfate to zinc sulfate 0.01 molar, copper sulfate 1 molar to copper. EMF of this linear cell is E1, and when the concentration of zinc sulfate is changed to 1 and that of copper changed to 0.01, the EMF of cell changes to E2. So what is the relation? वैसे तो बिना कैलकुलेशन के कर सकते हैं इसको, पर पहले मैं आपको कैलकुलेशन के साथ बता देता हूँ, then I let you know how to do it without using any calculation. So copper sulfate 1 molar, zinc sulfate 0.01 molar, value is E1. So E cell is E naught cell minus 0.0591 by 10 log of product over reactant. Product is zinc sulfate and reactant is copper sulfate. So that means if zinc sulfate concentration is increasing, in this case it is increasing, and copper sulfate concentration is decreasing, then what will happen? E cell will decrease. समझ में आया क्यों? Zinc sulfate is in numerator, copper sulfate is in denominator, and आगे नेगेटिव साइन है, तो जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी, ई सेल की वैल्यू उतनी कम होगी ना, समझे? तो ई सेल, इसका मतलब E2 जो है that is less than E1, or we can write E1 is greater than E2. Because initially it is zinc sulfate is 0.01, copper is 1, and after that zinc sulfate becomes 1 and copper sulfate becomes 0.01. तो जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, तो ई सेल की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज, वो समझ में आया बच्चे? और कौन बात कर रहा है वहां? और कौन है आपके साथ? उसको बोलो बाहर जाओ। Okay, gives energy for the decomposition of Al2O3 at 500 degrees Celsius is as follows. So see,
एल्यूमिनियम Al2O3 में aluminium is in the form of 3 plus, gain 3 electrons to give aluminium. So aluminium बन रहा है 4/3. So 4/3, so it is multiplied by 4/3. 4/3. So how many electrons are involved? 4. ये समझ में आया चीज? So electrons involved are 4. Now potential needed, difference needed, delta G is minus NF E cell. So what is E cell? Minus delta G upon NF. So delta G for the reaction is 960 into, ये जूल में कर लिया ना हमने, जूल पर मोल. N is, what is N? 4. And value of Faraday is 96500. So 2 cancel. (960) into 10 divided by 965 into 4. So almost it is 1. So value comes out to be 2.5. Though it is in minus, but it is potential difference needed for the electrolytic reduction of aluminium oxide at 500 Kelvin is at least, so it is 2.5 volt. तो यहाँ पे इतना ही पता होना चाहिए था कि what is the value of N. So in this case N is equal to 4. कैसे आया वो देख लो. ये था aluminium, और aluminium is formed from aluminium 3 plus. We need 3 electrons to get this 1 mole, but we need 4/3 moles. So to get 4/3, it is multiplied by 4/3. So 4/3 aluminium 3 plus 4 electron to get 4/3 aluminium. Four Faraday of electricity is passed. ठीक है. अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन. ये तो आ जाना चाहिए था बच्चे आपको क्वेश्चन. Strongest reducing agent is one which has least reduction potential, and strongest oxidizing agent is one which has highest reduction potential. So highest reduction potential is of fluorine. So fluorine is strongest oxidizing agent. ठीक है. And iodine is reducing agent. ठीक है. Fluorine can gain electron, or iodide can lose electron. इसका मतलब fluorine is strongest oxidizing agent,
आयोडाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? हेलो। ओके बेटा, तो इतना ही करते हैं आज।